As today, as you are sir, in the spirit of our conversation, I will not say the name Epstein, and I will not say the name Anil Ambani, and I will not say the name. No, I will not say, sir. You are a leader of opposition. Okay. Or, so let me speak, sir. Please, I think so. I will not do it, sir. The whole nation is watching you. I know. I know that. That's why I'm saying it, sir. On one side, you are saying, I will not mention the name. Again, you are mentioning the name. I'm saying so I think you are not ready to avoid the name. Please. Okay. Anyway, so I will not go into the names. But I would like to say, I think so. You have to speak only on budget. बैठिए किसी आप बजट पे बोलिए ना. There is a general discussion on the union budget for 26, okay, sir, let me speak. 27. Okay. So I think. Nice. So, Speaker sir, so I will avoid that. अब तो आप नहीं कहेंगे उस दिन आपने इनको बोलने तो दीजिए सर. So, the point is that I do not believe that any Indian Prime Minister, including Mr. Modi, would sign such a deal unless there was a chokehold on him. So, I do not, sir, this budget that you have. You and your member have not a unique question. I believe that day when Piyush Goyal had made a statement on the floor of the House. सर मुझे अब कंक्लूड तो करने दीजिए सर. चलिए. नहीं तो यहाँ 2-3 और घंटे लग जाएंगे सर. ओके थैंक यू. आप चाहते हैं तो मैं लगा देते हैं सर. नहीं, काइंडली कंक्लूड. So, we have buckled on tariffs. We have handed out our data, given up control over digital trade rules, no data localization, free data flow to USA, limit on digital tax, no source code disclosure, and 20-year tax holiday. The most valuable asset that India has and will ever have has been handed over. Our farmers have been left to the mercy of mechanized, massive American farms. Our textiles have been wiped out. Bangladesh now is going to wipe out our textile industry. Our energy security has been handed over. We can't buy oil from who we want to buy oil from. Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. Logic ही नहीं है सर. लॉजिक नहीं है सर. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है. सर आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज. सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज. बात आ गई. तो दिस इज अ होलसेल सरेंडर, एंड इट इज अ ट्रेजेडी because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture, on which there is a case in the United States. He has surrendered. I'm not saying anything. आप रिपीट बार एक चीज का हम रिपीट कर रहे हैं. हमने शुरू से सर आप लोग बैठिए ना. ये बोल सकते हैं. बोलने दो उनको. इसको कोई रूल मालूम नहीं है. पीछे से खड़े हो जाते हैं बिना मतलब का. इनका ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं. सर आपने मिस्टर राहुल सर बीइंग ए पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ही इज सेइंग
मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो आपने रूलिंग दिया है, मैंने तब भी कहा, राहुल गांधी जी ने बार बार रिपीट किया है, हमने फिर भी कहा कि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, हम लोग सुनने के लिए बैठे। आप फिर से रिपीट किया, दो तीन मुद्दे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है, यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग, देयर इज अ सीरियस कॉनोटेशन। I would urge Honorable Leader of Opposition, because he is the Leader of Opposition, all the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. I've got it. You have because let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir. I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग। I will say it and then I will give it. No, Mr. Rahul ji. I will say it now and I will give it. नहीं राहुल जी, I have it here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। So you ask for authentication now, you have to not give it to me. आप अपनी सीट को रखिए, आप रखिए अपनी सीट को। आपको शायद ऑथेंटिकेशन वो क्या समझे, इधर ऑथेंटिकेट करता हूँ, ऑथेंटिकेट नहीं है। ही शुड प्रोड्यूस द प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रॉपर रिकॉर्ड, अदरवाइज और साइन करके देना है, अदरवाइज ऑथेंटिकेट। उनको बोलिए भाषण। सर, यूएस गवर्नमेंट ने ऑथेंटिकेट कर दिया था। Speaker, आप कंक्लूड करें। Sir, Speaker, sir, Minister has asked me. फिर मिनिस्टर की बात मत करिए। But बोलो दीजिए, कंक्लूड तो करने दीजिए सर। कंक्लूड करिए। Sir, Minister of Parliamentary Affairs has asked me to authenticate my allegations. I have them written here. I am going to authenticate. Oh, that is a procedure. मतलब I will also give the procedure. So then you have to follow that procedure. Yes, but I want to. Here you are only speech No, but on I want to budget. authenticate. Only you just conclude your budget speech, because if you want to submit something, so please in future you can just according to your procedure, then you have to submit. Please. Okay.